Hello and welcome to the On Record podcast. I'm your host, Ujjwala. खेती विरोधी काले कानून रद्द करो। खेती विरोधी काले कानून रद्द करो। क्या है, देखिए औरत पर दोहरी जिम्मेवारी होती है। औरत घर भी संभालती है और क्योंकि हमारे भाई, पति, चाचा, ताऊ, बेटे सब जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो हमारी दोहरी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस प्रोटेस्ट में भी साथ रहें और हम अपने घर को भी उसी तरीके से संभालें जैसे वो पहले संभल रहा था। This is Suman Huda, a volunteer at the Tikri border on the outskirts of Delhi. She has been helping the women farmers with all their needs for over 100 days now. तो हम अब दुगनी ताकत से काम कर रहे हैं। हमने अपने टाइमिंग को डिवाइड किया है ताकि हम इधर भी टाइम दे पाएं, उधर भी टाइम दे पाएं। हम अपना घर भी संभालते हैं, हम अपनी खेती संभालते हैं और हम बॉर्डर पे जाके काम भी करते हैं, जरूरत की चीजें और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। Tikri border, which was once just a place on the outskirts of Delhi, is today one of the many protest sites where women have gathered in thousands and are organizing the protest alongside men against the three controversial farm laws. The three laws, which are part of the government's agricultural reform policy, claims to make it easier for farmers to sell their produce directly to private buyers. But the law does not clarify at what rate the harvest will be purchased, and farmers fear losing their bargaining power when they sell their produce to large corporates. 11 rounds of talks between the farmer organizations and the government have failed to draw any conclusion. The government proposed to suspend these laws for 18 months. But the farmers are not ready to accept any quick fixes and have said they would continue to protest until the laws are repealed. On 26 January, violence erupted in parts of Delhi during the farmers' tractor rally. And then the things changed. जो जोश है, जो 26 जनवरी के बाद का जो इशू हुआ है, उसके बाद तो लेडीज की संख्या 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना आप कह सकते हैं कि हर बॉर्डर पे बढ़ गई है। लेडीज जागरूक है, हर धरने पे, हर टोल पे और हर बॉर्डर पे लेडीज की बहुत बड़ी संख्या अब मौजूद हो चुकी है। हमें सरकार से उम्मीदें थी कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हम जो है कुछ जो कानून है इनमें सुधार करवा के या इनको वापस करवा के हम घर चले जाएंगे। बट जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, इसमें वायलेंस हुई और उसके बाद जो चीजें निकल के सामने आई, तो इसमें ये बात मेन रूप से सामने आई कि ये आंदोलन अब सिर्फ पुरुषों का आंदोलन नहीं रह गया है, इसमें बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को सबको शामिल होना ही होना पड़ेगा। A report by Oxfam India notes that women's contribution to agriculture is largely overlooked in India, though they comprise 33% of the agricultural labor force in the country. 80% of all economically active women in India are employed in the agricultural sector, but their labor is mostly seen as domestic work and they are not recognized as farmers. The Supreme Court had earlier suggested that women and children leave the protest site. In response, the women farmers took to the stage, mobilized other women, and voiced their concerns louder than before. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਤਾਨੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਤਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Harinder Bindu is a farmer leader from Bharatiya Kisan Union Ekta Ugran, and she's saying here that the court thinks women are weak, but we are not. We are fighting for our land and livelihood, as women would be affected too if these laws are not repealed. For over 3 months, Bindu has been attending to the needs of women farmers at the Tikri border, and she is busy mobilizing other women from her village to the protest. ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਦੇਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਹੈ
कि ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Bindu says that the protest has helped the women come out of their homes and see the world. She says that the women have realized that they can do the tasks which men can do. The women who sowed the seeds, transplanted the seedlings, removed the weeds, and harvested the crops invisibly are now serving langars, cleaning the protest site, organizing discussions, and taking part in the administrative work. At the protest, the women are no more invisible. Their voices are heard, their numbers are counted, and they are recognized. But the struggle to establish gender equality at the grassroots has a long way to go.